Hey guys, time for a mileage test with the Kia Sonet. मेरे पास है डीजल ऑटोमेटिक गाड़ी. The claim number is 18.6 kilometers per liter. Let's see what is the real world mileage. I have filled up the tank of the car. We'll drive the car in Bhopal for 100 kilometers. गली में चलाएंगे, हाईवे पे चलाएंगे, सब जगह चलाएंगे. And let's see what is the real world mileage. So now we'll start the mileage test. और मैंने ट्रिप मीटर को रीसेट कर दिया है. Now just for some clarity, this car has 3 driving modes: Eco, Normal and Sport. I'll be driving the car throughout in normal mode. Eco mode और sport mode सिर्फ 5 मिनट के लिए चलाएंगे just to see the difference. But throughout the mileage test, the car will be in normal mode and we'll drive at normal city and highway speeds. जो भी speed limits है वो हिसाब से वो follow करके हम drive करेंगे. Now because it is quite cold and pleasant here in Bhopal, I won't need the AC a lot. तो मैं इसको 26 पे set करके रखूंगा and of course the music will be playing in the car. तो चलो start करते हैं mileage test. I'm quite excited. I'm actually hoping to beat the ARAI figure this time. Completed the first 25 kilometers of this mileage test and the MID is showing 20.2 kilometers per liter. 20-25 kilometers जो मैंने चलाई, out of that around 19-20 kilometers I actually drove inside the city on small roads, crowded roads and अभी जाके highway touch किया हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही and mileage figures are looking quite nice. I am also liking the drivability of this car. ऑटोमेटिक है, बहुत स्मूथ है एंड यार द किया सोनेट इज द ओनली कार इन द होल सेगमेंट जिसमें एक प्रॉपर डीजल ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है. नेक्सॉन में मिलता है लेकिन दैट इज एन एएमटी एंड व्हेन यू डजंट गेट डीजल ऑटोमेटिक तो यही गाड़ी है एंड दिस इज अ बिग यूएसपी ऑफ दिस कार. इंजन भी मजेदार है, 115 PS ऑफ पावर, 250 Nm, सेम ट्यून एज द सेल्टॉस, कारेंस, क्रेटा, अल्काजार एंड काफी अच्छी ड्राइबिलिटी ऑफर करता है. नॉर्मल मोड में ही मतलब मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में. सो नो इश्यूज, नो कंप्लेंट्स ऑन द परफॉर्मेंस फ्रंट, बोथ इन टर्म्स ऑफ द इंजन ऑल्सो एंड द ट्रांसमिशन ऑल्सो. माइलेज भी मतलब अभी तो अच्छा दे रही है, देखते हैं माइलेज टेस्ट के एंड में कितना हम लोग को मिल जाता है. एंड आई एम एक्चुअली लाइकिंग दिस कार. स्मॉल, कॉम्पैक्ट, इजी टू ड्राइव. आई थिंक फॉर people who drive majorly in the city and for small families, probably dink families, double income, no kids families, I think such cars do make a lot of sense. तो चलाते गाड़ी को थोड़ा और एंड इन द नेक्स्ट अपडेट वील ऑल्सो टेस्ट द ADAS फीचर्स ऑफ द कार हाईवे पे, क्योंकि प्रॉपर मार्किंग्स है पे तो देखते चलते कि नहीं फीचर कैसे चलते हैं वो सब चीजें पता करते हैं. वील ऑल्सो इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो टॉक मोर अबाउट द ड्राइविंग डायनामिक्स ऑफ द कार, द कंफर्ट आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव एंड फाइनली द माइलेज. Completed 50 kilometers with the Kia Sonet diesel auto and the mileage is now showing 20 kilometers per liter. I think काफी बढ़िया mileage दे रही है गाड़ी and hopefully यही maintain रहेगा वीडियो के end तक. So the highway is actually empty. I'm maintaining speeds between 80 to 100 kilometers per hour. That is the sweet spot and the car is still in normal mode. तो इसको sport mode एक बार try कर लेते हैं. It feels a little more responsive. Definitely the car feels eager to gain pace. And eco mode में भी try कर लेते. The car is in eco mode now. Eco mode feels a little relaxed. The throttle response is very slow and the normal mode is a sweet spot between the two. Normal में आ गए हम लोग वापस and of course this car has level 1 features, not level 2 unlike the Seltos. तो लेवल 1 फीचर्स में बेसिकली आपको बेसिक चीजें मिल जाती है एंड यू गेट फॉरवर्ड कोलिजन असिस्ट फीचर, यू गेट लेन कीप असिस्ट, लेन फॉलो फीचर, ऑल दीज फीचर्स. तो ऑफ कोर्स अब फॉरवर्ड कोलिजन हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट वांट थिंग्स टू गो रॉन्ग, बट वी कैन ऑफ कोर्स ट्राई द लेन कीप असिस्ट फीचर. देखते हैं कितना एक्यूरेटली चलता है बिकॉज देयर आर लेन मार्किंग्स ओवर हियर. So what I'll do is I'll drive the car at a decent speed and I'll try to get it outside the lane. Try करते एक बार चल रहा है कि नहीं. It says keep hands on steering wheel and it is trying to bring the car back in the lane. Now we again have an empty stretch, so I'll just try to steer the car outside the lane. थोड़ा बाहर जाएंगे. It is bringing the car back in the lane and now it says keep hands on steering wheel. तो समझे कि नहीं आप लोग बात? तू समझा? हाँ. नहीं तू समझा नहीं. ADAS है आपकी गाड़ी में, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हाथ छोड़ के हमेशा चलानी है. यू हैव टू कीप योर हैंड ऑन द स्टीयरिंग व्हील. यू हैव टू बी अलर्ट बिकॉज हमारे रोड्स पे कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहीं से आ सकता है. सो वील कंटिन्यू द ड्राइव. सो फार इट हैज बीन क्वाइट नाइस एंड नेक्स्ट अपडेट मैं आपको देता हूँ 75 किलोमीटर्स पे. Completed 75 kilometers with the Sonet and the MID is now showing 20.3 kilometers per liter. इसका माइलेज कम नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहा है एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक इनसाइड द सिटी. यहाँ पे हाईवे खत्म हो जाएगा, आगे सिटी में वापस अंदर जाएंगे. विल ड्राइव द कार फॉर 25-26 kilometers to reach the same
पेट्रोल पंप, वहाँ पे डीजल भरवाएंगे एंड वील सी द रियल वर्ल्ड माइलेज। आई थिंक एयर है, जितना ही नंबर आएगा या उससे थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। लेट्स सी। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनामिक्स आई थिंक नॉट मच हैज़ चेंज कंपेयर टू द प्री फेसलिफ्ट सोनेट। एवरीथिंग इज एग्जैक्टली द सेम। स्टीयरिंग की फील सेम है, राइड क्वालिटी सेम है, सो नो चेंजेस व्हाटसोएवर ओवर देयर। राइड इज अ लिटिल ऑन द स्टिफर साइड बट ठीक है, नॉट बैड एट ऑल। द स्टीयरिंग इज क्वाइट लाइट, फीडबैक is okay, not all that great, and overall the Sonet is a family car. It is meant for easy driving and I think it does that really well, तो वहाँ पे कोई complaint है नहीं। So overall yeah, it's a very nice car to have. Apart from that, in terms of the features, I think segment best features इसमें आपको मिल जाते हैं। सब कुछ है इसमें, मतलब you get a nice audio system, digital instrument cluster, ADAS, ventilated seats, electrically adjustable driver seat. It has almost everything you can ask for. So that way I think it's a good thing to have. कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसे कि यहाँ पे आपको मिरर नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, एंड द रियर सीट डजंट हैव अ हेडरेस्ट फॉर द मिडिल पैसेंजर। सो दोज थिंग्स कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड, बट दैट्स अबाउट इट। सो हम लोग ने एक डीजल भरवा लिया है गाड़ी में अप टू द फर्स्ट ऑटो कट ऑफ मार्क, जस्ट लाइक द फर्स्ट टाइम व्हेन वी केम इन द मॉर्निंग, एंड द कार टुक इन 6.06 लीटर्स ऑफ डीजल अमाउंटिंग टू 569 रुपीज। तो कितना माइलेज मिला? 101.4 डिवाइडेड बाई 6.06 इक्वल टू 16.73 किलोमीटर्स पर लीटर। MID was showing 19 किलोमीटर्स पर लीटर, ARA फिगर है 18.6 किलोमीटर्स पर लीटर। रनिंग कॉस्ट कितना है? द कार टुक इन डीजल वर्थ 569 रुपीज and we drove the car for 101.4 kilometers. So the car took in 569 rupees worth of diesel and we drove the car for 101.4 kilometers, which means the running cost is 5.6 rupees per kilometer, which I think is very reasonable, and the car is definitely quite fuel efficient for the kind of power, comfort and all that it offers. Automatic भी है तो अच्छा माइलेज हमें मिल गया है, मैनुअल होती तो और भी बेटर माइलेज मिल सकता था। So this was the detailed mileage test video of the Kia Sonet, which was brought to you by TradeCred. TradeCred is a smart investing platform wherein you can register and invest money with a starting amount of just 50,000 rupees. TradeCred is quite safe to invest and you can realistically expect returns of 10 to 12% IRR, which I think is quite good. They also have a very good past history, and अगर आपको और जानना है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके लॉग इन कर सकते हैं यूजिंग द लिंक विच इज इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन बिलो एंड ऑल्सो इन द पिन्ड कमेंट बिलो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द Kia Sonet। Hey guys, time for a mileage test with the Kia Sonet। मेरे पास है डीजल